Hey everyone, and welcome. Today we're going to dive into two of the most fundamental, absolutely essential building blocks of the English language. In just the next few minutes, we're going to get crystal clear on the difference between nouns and pronouns. And trust me, you'll see why mastering them is kind of like a secret weapon for great communication. All right, first things first. Just try reading this sentence out loud. Maria said Maria would be late because Maria's car broke down. It sounds clunky, right? It's repetitive and just plain awkward. This is the exact problem we're here to solve today. So keep this sentence in your head, because we are definitely coming back to fix it. So to fix that sentence, we first have to understand its main character. Let's start by unpacking the building blocks of our language, beginning with the star of pretty much every sentence you can think of. And that star? Well, it's the noun. As you can see, a noun is simply a word for a person, a place, a thing, or even an idea. You can think of a noun as the subject of the sentence. It's the who, the where, or the what that the story is all about. And in practice, this is super simple, right? A person could be Sarah, a place could be London, a thing could be a car, like the one in our broken sentence. Nouns can even be these big abstract ideas like freedom. Each one of these acts as a specific subject in our sentences. Okay, so if nouns are our main characters, what happens when we just keep repeating their names over and over? Well, as we saw, the sentence gets clunky and weird. And that's exactly why we need a shortcut, something to make our language way smoother and faster. And here it is. Meet the pronoun. Its entire job is to replace a noun we've already mentioned. So, to keep our movie analogy going, if the noun is the star of the show, the pronoun is its super talented stunt double. It jumps in to keep the action moving smoothly, and it stops things from getting repetitive. And you totally know these words already. He, she, it, they, we, you, her, him. We use these all the time without even thinking about it. Seriously, they're like the unsung heroes that make our sentences just flow. Okay, now for the main event. Let's put these two concepts side by side. This is the moment where it all clicks. Remember our clunky sentence from the beginning? Look at the before on the left. Using only nouns? It's just a mess. But now look at the after on the right. Maria said she would be late because her car broke down. See? By just swapping in the pronouns she and her, the sentence becomes clean, efficient, and so much easier to understand. That right there is the power of the pronoun. All right, you've seen the theory, so now it's time to test your skills. Let's do a few quick practice rounds just to lock all this in. No pressure at all. This is just a fun way to apply what we've just covered. You ready? Okay, first one up. The dog wagged blank tail. What pronoun fits in here to replace the dog's? I'll give you a second to think. That's it. The dog wagged its tail. The pronoun its stands in for the noun dog. Perfect. See? You got this. Let's try another one. John is a doctor. He works at the hospital. What pronoun should we use here to replace John? Exactly. He works at the hospital. We establish our main character, John, in the first sentence, and then we let the pronoun he take over to keep it all smooth. Fantastic. Okay, last one. This time, it's plural. The students are ready. They studied hard. What pronoun do we use when we're talking about a group of people? You've got it. They studied hard. The word they just elegantly replaces the students and makes that second sentence way more concise. You're a pro at this. So we've defined nouns, we've defined pronouns, and you've even practiced using them. But why does any of this actually matter in the real world? Let's talk about how this simple grammar rule is actually a key to great communication. Getting this right gives your communication 3 superpowers. First off, as we saw with Maria, you avoid that annoying repetition. Second, you instantly improve the flow and the rhythm of your speaking and writing. And third, you communicate more clearly because your audience knows exactly which noun you're talking about. It's all about making your communication more efficient and, honestly, more elegant. And that's our deep dive into nouns and pronouns. But here's a final thought I want to leave you with.
Language. It isn't set in stone. It's alive. It's constantly evolving. Pronouns have changed throughout history, and they're still changing today. It really makes you wonder, doesn't it? What will the next pronoun be? कभी सोचा है कि ये जो शब्द हैं ये किसी बिल्डर के औजारों की तरह कैसे काम करते हैं, कैसे ये मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं। आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। जरा सोचिए कैसे कुछ गिने चुने साधारण से शब्द मिलकर पूरी की पूरी कहानियां, नए नए विचार, यहां तक कि एक पूरी दुनिया ही रच देते हैं। है ना कमाल की बात? ये भाषा का जादू ही तो है। तो इसका राज पता है कहां छिपा है? एक बहुत ही सिंपल से टूल किट में। हाँ, व्याकरण को नियमों की कोई भारी भरकम किताब मत समझिए, इसे एक कारीगर के टूल बॉक्स की तरह देखिए। अब देखिए, कोई भी शानदार इमारत बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक मजबूत नींव, राइट? तो हमारी भाषा की दुनिया में भी वो नींव है संज्ञा, जिसे हम नाउन कहते हैं। सीधे सीधे कहें तो संज्ञा मतलब नाम, किसी भी व्यक्ति, जगह, चीज या फिर किसी आइडिया का नाम। ये समझिए कि ये हमारे कंस्ट्रक्शन की ईंटें हैं, इनके बिना तो कोई दीवार खड़ी हो ही नहीं सकती। तो चलिए आज के हमारे इस कंस्ट्रक्शन के लिए हम अपनी पहली ईंट चुनते हैं, और वो है रोबोट। यही है हमारा सब्जेक्ट, हमारी कहानी का हीरो। और यहीं पर हमारे टूलकिट से एक और काम का औजार निकलता है, सर्वनाम यानी प्रोनाउन। ये क्या है? ये हमारी संज्ञा के लिए एक शॉर्टकट जैसा है। अब बार बार रोबोट रोबोट कहने की जगह हम यह कह सकते हैं। काम कितना आसान हो गया है ना? ठीक है, तो हमारी नींव तो तैयार है, पर अब इसमें जान डालने का वक्त आ गया है, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपने पावर टूल का, यानी क्रिया का। हमारे पास रोबोट तो है, लेकिन सवाल ये है कि ये कर क्या रहा है? बस यूं ही खड़ा है या नाच रहा है, कुछ सोच रहा है? जब तक ये पता नहीं चलेगा हमारी कहानी तो आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो क्रिया यानी वर्ब वो शब्द है जो हमें एक्शन के बारे में बताता है। ये हमारे वाक्य का इंजन है। सोचिए, अगर संज्ञा गाड़ी की बॉडी है तो क्रिया उसका इंजन, और इंजन के बिना गाड़ी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो चलिए फिर अपनी गाड़ी में इंजन लगाते हैं। अब हमारे पास है रोबोट चलता है। देखा, अब इसमें हरकत आ गई, एक जान आ गई है। तो हमारा ढांचा तो अब तैयार है, लेकिन एक अच्छा कारीगर क्या सिर्फ ढांचा खड़ा करके छोड़ देता है? नहीं, वो उसे सजाता है, संवारता है। अब बारी है फाइनल टच देने की, और इसके लिए हम यूज करेंगे क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। देखिए, रोबोट चलता है, वाक्य तो ये पूरा है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या हम इसे और मजेदार बना सकते हैं? भाई, वो चल कैसे रहा है? धीरे धीरे, या बहुत तेजी से, या शायद किसी बड़े ही अजीब ढंग से? बस यहीं पर काम आता है क्रिया विशेषण। ये हमें बताता है कि जो काम हो रहा है वो कैसे, कब या कहाँ हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में रंग भर देना। तो चलिए अपनी तस्वीर में रंग भरते हैं। रोबोट तेजी से चलता है। अब देखिए, हमारा वाक्य न सिर्फ पूरा है, बल्कि अब ये कहीं ज्यादा जानदार और दिलचस्प लग रहा है। तो देखा, हमने मिलकर अपनी एक छोटी सी इमारत खड़ी कर ली। आइए एक बार फटाफट से इसके फाइनल ब्लूप्रिंट पर नजर डाल लेते हैं। तो ये रहा वाक्य बनाने का सिंपल सा ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, अपनी मेन सामग्री यानी संज्ञा चुनें। स्टेप 2, उसमें एक्शन डालिए यानी क्रिया जोड़िए। और स्टेप 3, उसे और बेहतर बनाने के लिए डिटेल्स ऐड कीजिए यानी क्रिया विशेषण का इस्तेमाल कीजिए। और नतीजा? रोबोट तेजी से चलता है, एक मजबूत नींव, एक पावरफुल टूल और थोड़ी सी फिनिशिंग। बस एक शानदार वाक्य तैयार करने के लिए इतना ही तो चाहिए। तो अब ये टूल किट तैयार है, नींव, पावर टूल्स और सजावट का सामान, सब कुछ। अब सोचने वाली बात यह है कि इससे क्या क्या बनाया जा सकता है।